Hello, welcome to English Connection Between Brothers. So let's start with one of the share today. उड़ने दे इन परिंदों को फिजा में गालिब उड़ने दे इन परिंदों को फिजा में गालिब जो तेरे अपने होंगे वो लौट आएंगे. What do I mean by that? I mean to say that there are some people who are connecting onto this platform for learning English and for building their confidence, for enhancing their communication skills, isn't it? However, there are some people who are not interested. That is why I said that उड़ने दे इन परिंदों को फिजा में गालिब जो तेरे अपने होंगे वो लौट आएंगे. Means the people who are interested to learn English, the people who are working on their communication skills, the candidates who are looking for some job, who are giving interviews, the students who are in their academics and they want to become a good speaker, all those people are connecting very fast onto this platform. But the people who are not interested into it, they have some other goals, right? They may be like they're not interested to watch out this channel. So I request you that as many as of you are serious towards a goal, towards building your confidence in public speaking and to become the confident speaker, please like the channel, subscribe it and share, as well as if there is any feedback that you want to leave for me, please leave that into the comment section. So today we have already completed 11 parts of the grammar, and today we want to touch base the part 12, which is past perfect continuous tense. I have been talking about the similarities. I have been talking about the connections between present, past, and future, how all the sentences are associated to each other, how tenses in present, past, and future are associated to each other. There are a lot of similarities. There are just minute differences in the rules and how we form the sentences, how we translate them into English. Or maybe when you are speaking in front of people, when you are doing the conversation with the audience, and the audience could be your own friends, they could be your relatives, they could be your peers, they could be your colleagues, they could be your boss, and anybody with whomsoever you are talking, you will be using all those rules, all those your English communication styles with them, and that what makes you unique. Since we are going to learn about past perfect continuous tense today, I assume that you are well aware of the rules and structures, as well as you have also made several examples of present perfect continuous tense. Therefore, it becomes pretty important for me to tell all of you guys that there is no major difference in present perfect continuous tense and in past perfect continuous tense. Even past perfect continuous tense is easier than present perfect continuous tense. And do you know why? The reason is because in present continuous tense, we have to decide that whether we have to use has or have. Whereas in the past perfect, I'm talking about the helping verb. So in present tense, you have to decide that with the singular subject, you have to use has, and with plural subjects, you have to use have. Whereas when you start learning,
or when you start working on the past perfect continuous tense, the only helping verb that which is used is had. I have also spoken you, I have already taught you guys that we also use since and for in perfect continuous tense. Whether it is present perfect continuous tense, or it is past perfect continuous tense, or it is future perfect continuous tense. Where do we use since and for? Those details have been shared in the specific grammar class, as well as there are shorts videos also available onto my English Connection with Twin Brothers channel. So wherever you want to learn, whatever is easy for you, please go ahead and grab the knowledge. Coming back to the present perfect continuous, past perfect continuous tense, likewise, I always mention that there are 4 sentences in every tense. They are affirmative, negative, interrogative, and negative. Isn't it? So, in affirmative sentence, the rules are pretty easy, and they are just similar to present perfect continuous tense. I already mentioned that instead of using has or have, we use had here as a helping verb. So the structure for the past perfect continuous tense will be subject plus had been plus first form of the verb plus ing plus sincere for plus time plus object plus other words. To be precise, if I have to mention that where do we use since and for, since is used for point of time and for is used for period of time. Since it means for any specific time, for example 3 p.m., right? January 1990, any of the year. Whereas when we talk about the for, it means period of time, 3 hours, 4 hours, 5 hours, and so on. So without taking too much time, let's take some, live examples, and let us learn how to say those examples or how to say those sentences in English. And let's take the live one, the one which you guys have been saying very now and then and every day almost and every week. So मैं आप लोगों को अगस्त से पढ़ा रहा था. I had been teaching you guys since August. I had been teaching you guys since August. Now let us convert this into negative. मैं आप लोगों को अगस्त से नहीं पढ़ा रहा था. Simply you just have to add not after had. That's it. I've been telling that the grammar is very easy, and where you just need to understand the logic behind it. When you know the relation, when you know the logic of the grammar, nothing is difficult. It is just a piece of cake. And when you know the grammar, when you do have good word bank, never hesitate to talk to people. Don't think about it, let me remind you guys, don't think about it that what the world is thinking about you, whether you're going to talk like a William Shakespeare, you are going to talk like John Keats, or any of the very renowned people who doesn't make a mistake. But maybe like you'll reach to that label, isn't it? But not right now. You'll have to start from the scratch. You'll have to begin somewhere. Therefore, if you make mistake in the beginning, accept it, work on it, and just shine it later. Yeah. So it means that keep working on your mistakes, and everything will become fine. Things will be all right. There's another saying,
sorry that I'm taking a lot of time before I move to, negative sentence or past perfect continuous tense, but it is not my intention to teach you guys only grammar. My intention is that, while learning these grammar classes, while learning these, these conversations, you also start speaking and you also become the good speaker. Maybe like you'll become, very good speaker if you practice. So practice makes a man perfect. There's another saying that go slow to go fast. It means कि पहले आपको मेहनत करनी है, बट इट शुड बी कंसिस्टेंट. ऐसा नहीं कि आज आपने मेहनत कर लिया और आपको गो स्लो जाना है तो यू आर गोइंग टू वर्क ऑन द ग्रामर पीस आफ्टर अ वीक, आफ्टर अ मंथ. इतना स्लो नहीं चलना है. स्लो मीन्स दैट इट शुड बी स्टडी एंड कंसिस्टेंट. मतलब आप 1 घंटे मेहनत कर रहे हो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, 1 घंटे ही करो बट डेली करो. ठीक है? दिस इज व्हाट द गो स्लो. And go slow to go fast. It means when you're consistently working upon yourself and you have been enhancing your knowledge, definitely it will help you to grow in the career, to grow in the, that will also grow your knowledge. All right. So thank you. Let's move on to negative sentence. Talking about the negative sentence, मैं आप लोगों को अगस्त से नहीं पढ़ा रहा था. I had not been teaching you guys since August. क्या मैं आप लोगों को अगस्त से पढ़ा रहा था? Had I been teaching you guys since August? क्या मैं आप लोगों को अगस्त से नहीं पढ़ा रहा था? Interrogative and negative, जिसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नेगेटिव सेंटेंस भी है. So, had I not been teaching you guys since August? कितना आसान है ना? कितना भी तुम्हें बोलना हो, doesn't matter that how much you have to speak, doesn't matter that with whom are you talking. If you know the things, if you know the logic, if you know the rules, nobody can stop you and nobody can beat you. You will be the best person, you'll be the best speaker one day. But my request is that if you have not been working on yourself, if you have not been making translations from your daily life, that's where you're making mistake. Please do not do that. Do not make mistake, in terms of do not miss the classes. ऐसा भी it also should not happen that you're watching this video, I've been creating this video for you for 15 minutes, 20 minutes, sometimes even more than that, and you are going to watch it just for 2 minutes and you got bored. है ना? ऐसा ना कि 2 मिनट देखने के बाद में आप बोर हो गए और आपने एक फनी वीडियो की तरफ आपने स्विच कर दिया. जब आप कुछ ग्रामर, कुछ नॉलेज गेन कर रहे हो ना, स्टिक टू इट. अब उन चीजों को सीखो और सीखने के बाद में उनको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो. ठीक है? ओनली देन इट गिव्स यू द फ्रूटफुल रिजल्ट. ऑलराइट, लेट्स पिक अप सम अदर एग्जांपल्स. ऑलराइट, डू गाइस हैव सम एग्जांपल्स? कुछ एग्जाम्पल आप बताना चाहोगे? No? Yes, no, maybe? Alright, I am considering because, this very video is offline. Therefore, I am considering that all of you have been saying yes and you were working on the examples from your daily life in the background. ठीक है? इस टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं या इस टाइम पे आप मुझे अगर बना रहे हो ट्रांसलेशन, मुझे शो नहीं कर पा रहे हो, दैट्स फाइन. बट मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने दिनचर्या से ग्रामर, अपने डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स आप इकट्ठा कर रहे हो, उनको आप हर सेंटेंसेस में फॉर्म कर रहे हो, एंड देन यू आर यूजिंग दोज सेंटेंसेस विद योर सिबलिंग्स एंड विद योर नियर वंस, एवन विद स्ट्रेंजर्स आल्सो, नेवर माइंड. Okay, so the other example is I had been decorating my house for 3 days. Now यहाँ पे for 3 days, यहाँ पे for आ गया. जब अगस्त था, so अगस्त was definite and therefore we had used since.
जब मैं बात कर रहा हूं कि मैं अपने घर को 3 दिनों से सजा रहा था, तो यहां पे 3 दिन, 3 डेज जो है ना, दिस इज अ पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज नॉट पॉइंट ऑफ टाइम। 3 डेज कभी भी हो सकता है, इट इज जस्ट अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय है ये स्पेसिफिक टाइम नहीं है। 3 डेज मीन्स दिस इज अ पीरियड ऑफ टाइम। सो आई हैड बीन डेकोरेटिंग माई हाउस फॉर 3 डेज। मैं अपना घर 3 दिनों से सजा रहा था। मैं अपना घर सजा रहा था, या मैं अपना रूम सजा रहा था, यू नो, आइदर वे इट वर्क्स। या मैं अपना स्कूल सजा रहा था, या मैं अपना ऑफिस सजा रहा था, या मैं अपना डेस्क सजा रहा था, या आप खुद सज रहे थे, एंड सो ऑन, है ना। सो लेट्स कम बैक टू द एग्जाम्पल। आई हैड बीन डेकोरेटिंग माई हाउस फॉर 3 डेज। मैं अपना घर 3 दिनों से सजा रहा था। अब मुझे अगर बोलना हो कि मैं अपना घर 3 दिनों से नहीं सजा रहा था, सो बहुत सिंपल है। जैसे मैंने पहले कहा था कि हैड के बाद में जस्ट आपको नॉट ऐड कर देना है। आई हैड नॉट बीन डेकोरेटिंग माई हाउस फॉर 3 डेज। अब क्या मैं अपने घर को 3 दिनों से सजा रहा था? हैड आई बीन डेकोरेटिंग माई हाउस फॉर 3 डेज। और क्या मैं अपने घर को 3 दिनों से नहीं सजा रहा था? हैड आई नॉट बीन डेकोरेटिंग माई हाउस फॉर 3 डेज। समझ में आया कुछ? ऐसे ही एग्जाम्पल्स आपको अपनी लाइफ से, ये तो मेरी लाइफ है ना, एंड आई एम टॉकिंग टू यू गाइस, आई हैव बीन गिविंग एग्जाम्पल्स, लेकिन आपको इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपको अपनी लाइफ के कुछ रियल टाइम एग्जाम्पल्स आपको इकट्ठा करने हैं और उनको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। पहले आप पेपर पे अगर चाहते हो तो पेपर पे कन्वर्ट कर लो, एंड देन उनको आप अपनी स्पीकिंग में लेके आओ उसको, ठीक है ना। स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल यूजिंग दोज एग्जाम्पल्स, है ना। मैं कहता हूं कि अगर आपको कहना है कि यू नो कैन आई हैव ग्लास, लाइक कैन आई यूज दिस पेन, एंड सो ऑन। तो क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं? या कैन आई टेक दिस चेयर, एंड सो ऑन। क्या मैं ये कुर्सी ले सकता हूं, एंड सो ऑन। बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस भी आप बना के और आप अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हो। द ओनली थिंग इज दैट व्हाट यू नीड टू डू इज बिगिन। दोबारा बोल रहा हूं कि टुमारो नेवर कम्स। कल भी नहीं शुरू किया था करना मेरा वीडियो देखने के बाद में, तो आज शुरू कर लेना, एक्सक्यूज नहीं। ऑलराइट, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल. Next example is, they had been planning about their marriage for 2 years. They had been planning about their marriage for 2 years. 2 साल से अपनी शादी करने की योजना बना रहा था, या वे 2 साल से अपनी शादी करने की योजना बना रहे थे. बहुत लोग बनाते भी हैं, और कई बार ज़्यादा बनाते हैं, मतलब ज़्यादा दिन तक बनाते हैं. 2 साल, 3 साल, 5 साल तक अपनी शादी की योजना बनाते हैं. दैट इन दिस ईयर आई विल बी गेटिंग मैरिड, इन दिस ईयर आई विल बी गेटिंग मैरिड, इन दिस ईयर आई विल बी गेटिंग मैरिड, एंड सो ऑन. सो they had been, I mean, they had been planning about their marriage for 2 years. They had been planning about their marriage for 2 years. They had not been planning about their marriage for 2 years. Had they been planning about their marriage for 2 years? Had they not been planning about their marriage for 2 years? And so on. So मैं आपको हर सेंटेंस पे जाके अभी रूल्स आपको अलग अलग नहीं बता रहा हूँ. बहुत सिंपल है ना. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंसियर फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, या सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंसियर फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. ऑलराइट, ये नेगेटिव हो गया, एंड सो ऑन. आप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में या इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में आपका जो क्वेश्चन वर्ड होता है और प्लस हैड जो होता है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है. ठीक है, इतना सा डिफरेंस है. अब नाउ ही हैड बीन अप्लाइंग फॉर जॉब सिंस 2019. अब यहाँ पे मैंने कहा था ना कि जब भी साल होगा तो वहां पे वो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो वहां पे सिंस लगेगा. ही हैड बीन अप्लाइंग फॉर जॉब्स सिंस 2019.
अब मुझे अगर निगेटिव में, मतलब वो 2019 से जॉब के लिए या जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहा था. ही हैड बीन अप्लाइंग फॉर जॉब्स सिंस 2019. अब मुझे अभी अगर मुझे बोलना है कि वो 2 साल से जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहा था. ही हैड नॉट बीन अप्लाइंग फॉर जॉब्स since 2019. He had not been applying for jobs since 2019. अब क्या वो 2019 से जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था? Had he been applying for jobs since 2019? अब क्या वह 2019 से जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहा था? Had he not been applying for jobs since 2019? Right? And so on. दुनिया भर के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, है ना? लेकिन वो तभी होंगे जब आप सोचोगे कि आपको पढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको अच्छा बनना है ना? And then you will become the best people, best person on this earth, best person in the family, best student in the class, right? And so on. कहते हैं ना कि करने से होता है. सो अगर आपने अभी तक अगर आपने ग्रामर सीखना शुरू नहीं किया है, आपने अगर ग्रामर सीखना शुरू कर दिया और अपने कम्युनिकेशंस में उसको आप स्पीकिंग में यूज नहीं करो, प्लीज स्टार्ट यूजिंग दोज skills, those learnings in the speaking on the daily basis. ठीक है? All right. So let me try to bring you something interesting for you. Give me a moment, just bear with me, guys. Since I started a thing, I started today with the shari, I want to finish this discussion for today with the shari itself. So just stay tuned. One moment. All right. So I'm going to enchant and I'm going to tell a shari for you guys. And I hope that you guys are going to like it. Okay. If you like it, please leave that into the comment section. So ये है कि जो आईने में है उसकी तरफदारी भी करनी है. जो आईने में है उसकी तरफदारी भी करनी है, मगर जो हम में है उसे हमें यारी भी करनी है. जमाने भर में जाहिर अपनी खुददारी भी करनी है. जमाने भर में जाहिर अपनी खुददारी भी करनी है, मगर दरबार में जाने की तैयारी भी करनी है. मोहलत 4 दिन की और है 100 काम करने को. है मोहलत 4 दिन की और है 100 काम करने को. हमें जीना भी है और मरने की तैयारी भी करनी है. So guys, life is very busy. And if anyone of you feel that you do not have something to work, you're missing something. Please get up and start looking out the things that what is pending, and just focus on your goal, focus on your objective, and the things will be yours. With that note, thank you so much and stay tuned. I'll be coming soon on my channel again, English Connection with Twin Brothers. Request you that if you have not shared my channel in your contacts, please share that and ask the people to subscribe it so that they can also keep getting the new content and the information related to public speaking, communication skills, and more on to the English Connection with Twin Brothers. Thank you so much. Bye.